Anusha, am I audible Yes, and visible? yes, absolutely. Okay, you can also turn on your video. Okay, excellent. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all to today's session. Assalamu alaikum. दामिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही. अस्सलाम वालेकुम. So welcome हरफन औरत में. टुडे आज हम जो है जिस बारे में बात करने वाले हैं वो UI UX है. हमारी स्पीकर हैं किरण सज्जाद. So let's start. Is everything okay from my side now? जी जी. So हम आज की जो बुनियाद आप लोगों को आप सबको दामिया आपकी आवाज़ कट के आ रही है. Damia, you are breaking. Damia, do rejoin. Assalamu alaikum everyone. Sorry for this conscious. Welcome back to another session. हरफन औरत के दूसरे सेशन में आप सबको खुश आमदीद. जैसे कि पिछले सेशन में हमारा जो एक टॉपिक था अबाउट कैरियर सेशंस में और एक हमारी स्पेशल गेस्ट थी क्रिंजा जिन्होंने अपनी एक सक्सेस लाइफ स्टोरीज बताई कि वो उन्होंने अपना शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक उनका एंड हुआ. And today we have a great speaker which is about design thinking क्योंकि ये हर औरत के अंदर एक अंदर एक स्पीशीज में एक फितरूत है कि जो डिजाइन है वो तो औरत के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता. लाइक डिजाइन इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. सो आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो किरण सज्जाद है एंड शी इज द UI UX डिजाइनर और शी विल टेल अबाउट एवरीथिंग के what can we do as an UI UX designing as a woman tech. So let's have a Kiran. अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड. आप कैसी हैं? We are good. I hope your net is working well right now. आई होप सो. Okay, guys, आज जो हमारी होस्ट है वी हैव लाइक लिटिल बिट connection issue. अगर बीच में कुछ स्टक हो जाता है so we are apologize but we hope that it goes well. So Damya, back to you. Yes, the cross finger is must. So Damya, it's your turn now and I'm out. थैंक यू. दामिया, यू आर स्टक. दामिया आप ऑडिबल नहीं हैं.
Now am I audible? Yes. Yes, now you're audible. Okay, perfect. So I really apologize for the inconvenience. I'm having a network issue and electricity issue as well in my side. Um, Okay, so आपने जैसे कि बताया कि मैं किरण हूँ और मैं And Damya, you're stuck सेशन again. का महम किरण के थ्रू नाउ बेटर. Yes. Better. ओके, फिर मैं जल्दी से मैम किरण को हैंड ओवर करती हूँ उनके कुछ तारीफी कलमात बोल के. Ma'am Kiran is having 4-year experience in the desired field of UI, and she is working as a team lead of design in Emumba. And apart from that, she is having a true belief in this field as she can create impact and solve the challenging problems of the real world. So now I welcome you to the studio and I wish that you can proceed with further things. Over to you, ma'am. Thank you so much, Damya. It's a pleasure to be part of this session. I'm so sorry there was some internet issues. I don't know. It just pop up at the end, just in the last minute. But here today we will be talking about design thinking. I will just give you a general overview of what the design is and what are there are so many moments in the design, and also about what could be the career path in design field. So starting with design, there's a very normally people think that design is generally associated with women's. I remember when I was studying design, and we have almost like 98% of my class was full of girls. And there were so many girls, and somehow whenever you say the word design, it is associated with fashion design, textile design. It was like about 5 years back, but now I have seen that the design field is literally the design field is growing, and people are getting understanding of what the design is. And they are not just fashion design or textile design, there are lots of more things. Like there is graphic design, the normal thing that we in Pakistan, when it comes to studying, the only thing that is taught to us is about graphic design. उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपका जो ग्राफिक्स आपने बनाने होते हैं वो भी आ जाते हैं. और अगर हम जनरली देखें पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें डिज़ाइन की कोई ना कोई एक लाइक कोर्स होगा, या कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा, या कोई ना कोई डिग्री का नाम होगा. लाइक कम्युनिकेशन डिज़ाइन, कहीं पे कंप्यूटर ग्राफिक्स, देयर आर मल्टीपल नेम्स दैट आर बीइंग यूज्ड. देयर इज़ नॉट वन नेम दैट या कोई एक डिग्री का नाम, जिस तरह CS है या कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो वो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और हर यूनिवर्सिटी में शायद एक ही नाम से एसोसिएट भी की जाती है. बट व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन में ये चीज़ नहीं होती. डिज़ाइन में हर आई नो अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद, बट नॉर्मली डिफरेंट नाम से एसोसिएट किया जाता है. और व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन में मल्टीपल चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं. व्हेन इट कम्स टू द बैचलर थिंग, इन बैचलर्स देयर आर लाइक आपको फोटोग्राफी भी कराई जाएगी, आपको एनिमेशंस भी सिखाई जाएंगी, आपको हर चीज़ का एक जनरल जो होता है ना फ्लेवर दिया जाता है, which is quite of a very मुझे लगता है that's a very great thing, because जब आप bachelors में most of the people don't know what they want to do in their life. That's the dilemma that we all share. And जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, I didn't know what I wanted to do. I just मुझे किसी ने कहा भाई डिज़ाइन कर लो, and I started doing that. But जब आप डिज़ाइन में, when I entered design, there were so many things that I could learn, I could explore, जिसकी वजह से I think मेरी understanding काफ़ी बेहतर हुई in terms of what I wanted to do.
UI UX, I am specifically UI UX designer, and for me, when it comes to studying part or in terms of university, UI UX बहुत से लोग जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता और कोई हमारे पास कोर्सेज भी नहीं है. आई डिडंट स्टडी UI UX. और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई थिंक CS के स्टूडेंट्स को शायद कुछ जगहों पे UI UX पढ़ाया जाता है एज अ कोर्स, बट नॉट मच. दैट्स समथिंग जो हमारी कंट्री में एक चीज़ जो आपको एक मिसिंग लगती है. तो हमारे पास जब भी हम डिज़ाइन में देखते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. एक जिन्होंने जनरल डिज़ाइन पढ़ा होता है और फिर वो UI UX डिज़ाइन की तरफ आए होते हैं, और सेकेंड पीपल आर दोस्त जिन्होंने UI UX नहीं पढ़ा होता. वो CS के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, वो IT के हो सकते, टेलीकम्युनिकेशन, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, and they want to do something. They are more interested in UI UX, so वो jump कर जाते हैं UI UX field में. So these are the two kind of people. I have worked with both of them. हर दोनों के स्टाइल में एक यू कैन से कि हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अगर डिज़ाइन ओरिएंटेड होगा तो उनका शायद वो लॉजिकल चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि वो प्योरली एस्थेटिक्स की साइड से आ रहे होते हैं. उनकी जो डिज़ाइन की ग्राउंड नॉलेज है, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू CS बैकग्राउंड या किसी और बैकग्राउंड से आए हैं, तो दे आर मोर लॉजिकल. दे अप्रोच थिंग्स काफ़ी सिस्टमेटिकली. उनकी कुछ जगहों पे शायद आपको उनकी प्रिंसिपल्स या डिज़ाइन की जो बेसिक्स हैं वो थोड़ी बहुत आपको हिलती नज़र आएंगी, या आपको इतनी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं नज़र आएगी. लेकिन दैट डजंट मीन दैट दे आर बैड डिज़ाइनर्स, दे आर रियली गुड डिज़ाइनर्स. और वो उनका थॉट प्रोसेस बहुत लॉजिकल होता है, which is a key thing in UI UX design. So that's how these two fields इस तरह से हम एक blend आपको मिलता है मार्केट में UI डिज़ाइनर्स का, और वो हर फील्ड से आए होते हैं. It's not just the designer who's graduated from design school and they come there. तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और दैट मेक्स द टीम्स रियली इंटरेस्टिंग. जब आप किसी भी कंपनी में जाओ, उनकी डिज़ाइन टीम्स देखो, एंड दे आर फ्रॉम मल्टीपल बैकग्राउंड्स, उनके अपने स्किल सेट हैं, उनकी अपनी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है. तो उससे आई बिलीव एक डिज़ाइन टीम भी ग्रो करती है, डिज़ाइन इंडस्ट्री भी ग्रो करती है, और आपकी जो IT इंडस्ट्री है, विच इज़ जो एक जिनको आजकल और हम मतलब अब डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी ग्रो करती है. UI UX डिज़ाइन में अगर हम जॉब्स पैटर्न देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न. अबाउट 5 years ago लोग डिज़ाइन करते थे, डिज़ाइन को सिर्फ फेस वैल्यू पे लिया जाता था. People used to think that just making a beautiful object is design thing, that's it. But अगर हम अब देखें तो मार्केट हैज़ एक शिफ्ट आपको नज़र आता है. हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, एप्लीकेशंस वो देखते हैं, वो सब कुछ उनके जितनी भी वेबसाइट्स की एक्सेस है, सब चीज़ों की एक्सेस है. तो उसकी वजह से यू सी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द वर्ल्ड अबाउट हर बंदा. दे वांट टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स, दे वांट टू अपनी प्रोडक्ट को ग्रो करना चाहता है. And design is something, UI UX design is something that helps you do that. You can, it will help you to it provides you frameworks, it provides you tool set जिसकी वजह से आप किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं. और अभी आपको पाकिस्तान में भी जनरली इन my 5 years career I have seen that people have developed that understanding. Whenever you talk to any designer, they will not just talk about colors, shapes, this tool or that tool, or this tech is very very cool right now. They won't talk about the trends. They will talk about the thinking. They will talk about, okay, why you do this, why you have made this design like this, what if we follow this approach, or what we follow that approach. So process, the thinking behind that design has become very important. Whenever any of the companies hiring, they will look for these things. This is a very common pattern
that you will follow in the new and latest designers and these and experienced designers. You will see that in these years, if you want to, and even now, if you want to stand out, you should know, you should know about the, what is, what experience you want to give to the user, what are the user needs, what they want. You, if I want to make an app pink, I cannot make that app pink unless I understand that audience wants the pink color. If the audience wants blue color, then I should, as a designer, to be honest, I should provide them with that color. Otherwise it doesn't make sense. I'm just satisfying my, my own aesthetics or my own maybe ego. But yeah, we don't want that. uh, that's what the design, how we follow the design. Now, when you are from some other field and you want to switch to design, especially UI UX design, there's one difference that I would like to explain, that there's this graphic design and then there's UI UX design. Graphic design is, there are people who do graphic design, and lots of people, lots of companies ask their designers to do, web applications, app design and everything, and they call them graphic designers. Graphic designers are basically, mainly they do logo design, print, social media campaigns, etc., etc. But UI UX design is specifically the person who work on websites, applications, and websites and applications, and they literally they they focus their attention towards the experience of a user, what experience they want to give to the user. And when you are starting on UI UX design, first thing that you should do is to read a lot about UI UX design. There are lots of books. One book is Don't Make Me Think. That's a great book. That's a good way to, this is the starting point. When you're starting on design, this is the starting point, especially for UI UX designers. This is a starting point. Don't Make Me Think. Then there is this great book by Don Norman, The Design of Everyday Things. That is also something that you can start reading. If you go, if you log into Medium, you can see lots of articles about design, about how you can make design better. There are lots of case studies of designers and other people, project managers. Now, the third thing that you can do is to practice. Practice, practice, practice. That's the key thing to be a better designer. Practice. And fourth is to find a mentor. Find a mentor, find a person whom you can share your designs with. You can ask questions, you can ask for advice, you can ask for feedback, because feedback is the most important thing if you want to be a better designer. Feedback helps you to grow. Not only you, but your mentor will grow as well if you talk to them about and give and take, give and take feedback. These are the four things that are really important if you're starting as a UI UX designer, and if you want to excel in this field. Build a network, find like-minded people. There's a great group on Facebook, UXTP. They that has almost like all the designers in Pakistan are in that group, and they're very, you can listen to their arguments, you can listen to it, you can see their feedback, you can see their discussions. They have these watch parties and stuff like that, and that is very helpful. When you listen to them, you will know more about the field. But in general, there are lots of opportunities, and if you are willing to start designing, just start. Don't wait, just start. And for women, and there was one thing that I was thinking, that why there are so many women in the field, in the design field. Well, yes, there are lots of women in the design field.
mostly perhaps that the one reason could be that somehow the color, women's are very good with the colors. They know all the shades of pink and all the shades of blue. For a men, even differentiating between a dark blue and light blue would be, a struggle. But I think we have moved really, like this is something I remember when I started studying design in our university. It was considered somehow taboo to, a male enrolling in a design course. It was considered taboo. But now I believe that there's lots of understanding has developed towards design, and males are also coming up and taking up the design field. When it comes to UI UX design, it is more associated with IT industry. And if any one of you are part of IT industry, you know that IT industry is there's a real struggle there. There's so much competition. You have to put so much, your खून पसीना आपको अपना बहाना पड़ता है for to be part of an IT industry, because there are lots of competition, lots of new things coming up, and you have to keep up with all these things. तो आपको एक blend मिलेगा, बहुत से designers ऐसे मिलेंगे जो UI UX like they are not designers, they are from any other field and they have switched to design. आपको बहुत से ये वाला factor बहुत common pattern मिलेगा. In terms of girls, I remember my juniors, my seniors, there are lots of designers जो girls थी. Or more, I feel sad to say that, but yes, बहुत सी लड़कियां हैं जो design मतलब पढ़ती ज़रूर हैं, बट उसको कंटिन्यू नहीं करती आगे. Somehow they drop it. But I would suggest कि it shouldn't be the case. अगर आप एक IT इंडस्ट्री में नहीं जा रहे, आप अपनी इंस्टा पे आप अपनी एक स्मॉल स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो. If you have a bit of understanding of design, you can design, post, and these are the things. अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो उससे आप बहुत अच्छी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो. आई नो मच ऑफ माई सीनियर्स जो ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, या ये लाइक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, या जो स्मॉल प्रीटी स्टफ बेचते हैं. बट आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन. अगर आप और कुछ नहीं कर रही हैं, सबसे आज हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि we should be, we are blessed. We are so much blessed to be part of this generation where internet आपको हर जगह पे नज़र आएगा, where you everything is accessible to you, where you have access of knowledge from every part of the world. I mean, that's the most interesting thing to be living in this age. And if you are living in this age, do utilize. There are lots of resources out there. If you don't know anything about design, there are so many free courses you can find online where you can literally start working. The only thing that's in your hand is to take initiative. बाकी सब कुछ आपके पास है. So yeah, and yes, pretty much these things. Now, if we start digging in on details के design है क्या, or what are the skills that are needed to make to be a good designer. Well, one thing that I would really want you guys to work on, जब भी आप कोई चीज़ design, if you are a designer, if you are designing anything, or if you are not a designer, but I believe that one thing that जो हर बंदे के करियर में उसे एक्सेल कर सकती है is to have a collaborative approach. Never think that you are alone enough. You are never enough. You should be able to work in an environment जहाँ पे बहुत से लोग हैं. You should be open to feedback. You should be open to this general discussion. अगर आपको कोई बात बोल रहा है तो you should accept it, and you should think about it. That approach takes you long way. That approach के नहीं मैं सब कुछ खुद करूँगी, मैं सब कुछ हो सकता है, और
And I believe that that is a very bad thinking. What you need to do is to have this collaborative environment. अगर कोई भी आपको कह के आके आपको suggestions दे रहा है design पे, always be grateful. First of all, grateful if they give you any suggestions. Second, if you find if they are just आप उससे agree नहीं कर रहे, even in that case, just be grateful, and if you don't want to follow it, don't follow it. But at least आप उसको accept करें. You doesn't need to have to be मैंने बहुत से designers देखे हैं. There is this mindset कि designer knows everything. This is not right. I mean, we all are people, and every time when you are sitting on table, every person in that room brings something interesting to the table. And whenever you are designing is also, there's one confusion among lots of people: art is equal to design. No, art is not equal to design. Art is something that is very subjective, that you do what you feel is good or right. But design is objective. Design is about people. If you are designing a wallet, it's about people. If you're designing a shoe, if it's you are designing an application, website, it's all about people. And in order to make a good product, what you need to do is to focus on what the user wants, what they are looking for. You're designing an app for them, not for you. So this is the key thing that you need to take care of. uh, you need to just talk to, whenever you are developing a product, you know who is the audience. If you know that who is the audience, just sit around with them, talk to them. Just for example, if you want to somebody comes to you and asks you, okay, please just plan a party for a 3-year-old boy. So you will never plan a party for a 3-year-old boy and made the theme pink. You will never do that. One thing that you should be doing is to just observe the boy, what he likes, what cartoons he likes, what colors he likes, what is his favorite activities, and then you extract the theme. And you, maybe he likes the Bob the Builder, so your theme could be Bob the Builder. So that's really important. If you don't do that, that kid won't be happy, right? So in design is not just creating stuff, amazing stuff, but creating amazing stuff, but design is about creating those experiences for the people, creating deep meaning, attaching deep meaning with the products they are using. That's what the whole concept of design is. That's it from my side. Over to Damia. If there is any questions, I would happily take that. Am I audible and visible? Yes. Yes. Kiran, though I'm not a designer, but I really enjoyed your session and it was really awesome. I get to know many things. एंड मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया आपकी बातों से रिलेटेड ही कि मेजॉरिटी वीमेन आर द पार्ट ऑफ डिजाइन, चाहते हुए ना चाहते हुए दे आर डिजाइनर्स. सो व्हाई एवरीवन चूज डिजाइन एज देयर स्टैंड बाय फील्ड कि अच्छा अगर कुछ नहीं तो चलो डिजाइन ही सही. व्हाई सो? Okay. Thank you so much, Damia, for this question. Well, this is a very interesting question because, yes, perhaps I remember when I heard about design field, and my parents were like, "You should try that because in the long run, if you don't have to, I mean, if you don't go to an office and you don't do a proper job, kind of a thing, you can sit at home and do it at home." So somehow डिज़ाइन की जिसने बाहर नहीं जाना वो घर बैठ के डिज़ाइन कर सकता है. दैट इज़ सम एक मेंटालिटी बनी हुई है हमारे पेरेंट्स की, हमारे एल्डर्स की, विच इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न. आपके अपने पेरेंट्स भी यही चीज़ मतलब आप कहेंगे अच्छा ठीक है आप ये नहीं कर सकती तो ये कर लो, राइट? द गुड थिंग इज़ दैट आवर पेरेंट्स वांट अस टू डू समथिंग, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जो आज से कुछ अर्सा पहले शायद ये चीज़ थी भी नहीं. बट yes, एक
चीज़ जो मुझे लगता है मिसिंग है हमारे अराउंड वो ये है क्योंकि जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें डिज़ाइन उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, हमें डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती। हमारी हमारी बहुत से स्टार्टअप्स आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत से ऐसी कंपनीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे डिज़ाइन को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। बहुत कम कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो प्रॉपर डिज़ाइन को अप्रिशिएट करती हैं, अच्छे डिज़ाइन को अप्रिशिएट करती हैं, और देयर उनका फोकस ही ये होता है कि हमने एक अच्छी चीज़ बनानी है, एंड डिज़ाइन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। जब हमारे इर्द गिर्द वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो शायद वो फिर हमारा एक वो जो होता है ना स्टैंड बाय पे चीज़ चली जाती है कि अच्छा ये नहीं करना तो ये कर लेना, राइट? सो आई बिलीव एजुकेशन का मसला है। द मोर वी विल एजुकेट पीपल टुवर्ड्स व्हाट द डिज़ाइन फील्ड इज़, टुवर्ड्स और इवन हम जिन लोगों को कहते हैं कि वो स्टैंड बाय ऑप्शन पे डिज़ाइन रखते हैं, दे आर ऑल्सो जस्ट टचिंग द बिल्कुल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग. There are so many things in the design that literally requires your effort, your mental effort, your thought process, or your आपकी learning बहुत ज़्यादा involve होती है. अभी जनरली डिज़ाइन को यही भी एक इसको स्टैंड बाय इसलिए भी रख लिया जाता है, डिज़ाइन के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है, राइट? बहुत से लोग होते हैं जो डिज़ाइन के लिए पढ़ते ही नहीं हैं. उनको आप फैशन डिज़ाइनर्स देख लें, नॉट टू वो बुरा भला नहीं कहने का इरादा, बट एक जनरल एक मेरी थॉट है, वो ये है कि फैशन डिज़ाइन में आपकी अगर ज़रा सी कलर सेंस है तो यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग थिंग, राइट? और बहुत से आपको डिज़ाइनर ऐसे मिलेंगे जिनको ग्राउंड नॉलेज नहीं होगी डिज़ाइन की. अब उन्हीं के डिज़ाइन को कोई प्रॉपर डिज़ाइनर देखेगा तो दे कैन उसमें बहुत से मसले निकाल सकता है वो, राइट? तो एक ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई डिज़ाइन तो हर कोई कर सकता है, और क्योंकि डिज़ाइन इज़ मोर टूवर्ड्स एक एस्थेटिक फील्ड है, एक एक ऐसी, और एस्थेटिक इज़ समथिंग जो हर किसी में होते हैं. ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स, ये सब चीज़ें हैं जो हर बंदे में होते हैं, और जब उन्हें वो चीज़ दे फाइंड दैट आउट, दे स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि हम सब लोग अपने ड्राइंग रूम्स सजाते हैं, हम सब के पेरेंट्स अपने ड्राइंग रूम सजाते हैं, एंड दे आर लिटरली डेकोरेटिंग इट because they think हम कभी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं करते, because they believe that they are the best interior designers, they know what they want to do, right? So I believe जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनको तो पता नहीं जॉब कैसे मिलती होगी, but yes, मेजर अंडरस्टैंडिंग का मसला है. आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक एजुकेशन नहीं है कि व्हाट डिज़ाइन इज़. हम सिर्फ कलर्स को चूज़ करना, एक इमेज को सेट करके लगा देने को डिज़ाइन समझते हैं. डिज़ाइन इज़ लॉट मोर. डिज़ाइन इज़ अगर हम प्रोसेस में, इवन डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस में आए तो हमें डिज़ाइन में बहुत कुछ मिल जाएगा. देयर आर फ्रेमवर्क्स, टूल सेट्स जो आपको हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो आपकी कंपनी को हेल्प कर सकते हैं बिगर डिसीजंस लेने में, एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने में. लेकिन जब हम इस तरह बात करते हैं तो वो क्योंकि वो नॉलेज नहीं है तो पीपल आर लाइक ओके दिस इज़ डिज़ाइन, दैट्स इट. सो ये आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन. Yes, you exactly did. Now I get to know कि भाई रश पड़ा हुआ इधर तो हर तरफ ही. Anusha is having one of the question. Yes, Anusha, you may ask. सो मैं ये कहने वाली थी पहली बात तो कि बहुत रिलेटेबल था. मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मेरे लिए तो बहुत रिलेटेबल था. सबसे पहली बात, जैसे कि आपने कहा कि एक सीएस और आईटी का स्टूडेंट बहुत लॉजिकल थिंक करता है और डिज़ाइनर जो है वो बहुत थोड़ा डिफरेंट वे में सोचता है. ये चीज़ मैं फील करती हूँ. तो मेरा जो सवाल है वो ये कि आप ये कोई कोर्स करवाया नहीं जाता यूनिवर्सिटीज़ में, या तो 6 मंथ्स का कोर्स हो गया, 3 मंथ्स का, या फिर हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं. मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ यूआई यूएक्स. सो मुझे एज सच इतना रिसोर्सेज या फिर गूगल पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं. मुझे एज अ डिज़ाइनर मुझे नहीं मिल रही. सो आपने किस तरह किया, मेरा ये सवाल है. Okay. Thank you so much, Anusha. That's something that I would really want to share because I started as a graphic designer myself. और उसके बाद I moved to a company, IT company. I joined Emumba. और वहाँ पे I believe that मेरी सबसे ज़्यादा learning UI UX में हुई थी. So मेरा career path इस तरह से था कि I
मतलब आई लर्न फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, और जो सारा डिज़ाइन नॉलेज है दैट वाज फ्रॉम कॉमसेट्स, वहाँ पे मैंने प्रॉपर डिज़ाइन पढ़ा था. बट व्हेन आई मूव टू यूआई यूएक्स डिज़ाइन, शुरू में जब आप एक बिल्कुल नई फील्ड में जा रहे होते हो, एक पूरा प्रॉपर अपनी फील्ड में ही कोई चीज़ स्विच कर रहे होते हो, देयर इज़ लॉट्स ऑफ फियर्स, पता नहीं होगा, नहीं कर सकूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, दीज ऑल थिंग्स. और हर जो डोमेन होता है, लाइक प्रिंट के अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया की अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसी तरह डिजिटल एनवायरनमेंट की अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं. उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ हो रही होंगी जो आप शायद अगर प्रिंट में काम कर रहे हो तो आपको समझ भी ना आए, राइट. और ट्रेंड्स बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम हियर टू देयर. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कलर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे दूसरी जगह बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करोगे तो शायद वो अच्छे ना लगे. बट ये सब कुछ होता है. बट एक चीज़ जो मेरे लिए लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जो मेरा पाथ चला था, दैट वाज कि मैं यूआई यूएक्स में काम भी कर रही थी. देयर वर सीनियर्स विद मी इन दैट कंपनी जिन्होंने मुझे गाइड बहुत ज़्यादा किया. आई यूज़ टू शो दैम डिज़ाइंस, और वो लिटरली शुरू में तो was lots of feedback, like pages and pages of feedback, right. One thing that is really needed is your thirst for knowledge. You want to learn everything, question everything. Second thing is just question everything. So it's really important to get a mentor if you want to switch to UI UX. um, for me, my mentor was in the company, so he guided me on. I used to ask him like literally lots of questions. When you start asking questions and you start sitting in those meetings where there are people doing UI UX and they are talking about things, शुरू की 2-3 meetings I swear वो आपके ऊपर से गुजरती है. But with time you start get hold of things. बट उसके साथ साथ एक ये चीज़ चल रही होती है, साथ आपकी दूसरी चीज़ जो चल रही होती है वो चल रही होती है आपकी अपनी लर्निंग. आप बुक्स पढ़ें. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स आपको यूआई यूएक्स पे मिल जाएंगी. यू कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर, मैं आई कैन शेयर द डिटेल्स एज वेल. आपको लॉट्स ऑफ बुक्स मिल जाएंगी, लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे यूआई यूएक्स की बात होती है. तो दैट्स योर ओन एफर्ट कि आप उन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें प्रॉपर. बहुत सी चीज़ें होती हैं वो करने से आती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप फॉर मी आई बिलीव दैट फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसने मुझे बहुत सिखाया है. When I design something, I took it to the project manager or any senior designer. उन्होंने काम देखा and then he will give me feedback. Why you have done this? Why you have done that? And and when you are learning things, be open to the feedback. Don't take it personally. Just have this thing कि भाई मैंने सीखना है. And when you do that, you will surely learn. अभी जैसे आपने कहा कि मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिले, उसमें यह है कि फर्स्ट I'll share the resources with you. Books कुछ मैं mention कर चुकी हूँ. Don't make me think, design of everyday things है और आपके पास अगर आप वेब फॉर्म्स पे काम करें तो वेब फॉर्म डिज़ाइन इज़ अ वेरी ग्रेट बुक. अगर आप डैशबोर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड डिज़ाइन इज़ अ ग्रेट बुक. So these are 3-4 books जो आपको particular field से related मिल जाएंगी. Otherwise, there is a channel for designers, Flux के नाम से I believe. That is also useful. वहाँ पे आपको वेबसाइट डिज़ाइन, इसमें डेवलपमेंट पार्ट भी है, बट यू कैन मिस द डेवलपमेंट पार्ट. वेब डिज़ाइन पे आप वो कर सकती हैं, उनको फॉलो कर सकती हैं. इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डिज़ाइनर, ही वर्क्स ऑन वेबसाइट्स. Then if you are generally looking for design, so there is a channel with the name The Future, FUTUR. They have great content about design. उसके अलावा जो है आप मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी खोलें. मटेरियल डिज़ाइन में आप जब उनकी सारी लाइब्रेरी को गो थ्रू करेंगी, यू विल लर्न अ लॉट, क्योंकि उसमें आपको बहुत से यूज़ केसेस ऐसे मिलेंगे जो शायद आप वैसे अगर आप किसी और उसमें कर रही हैं काम तो वो आप नहीं देखते. मटेरियल डिज़ाइन इज़ अ ग्रेट लाइब्रेरी. रिसेंटली वी आर यूजिंग एन लाइब्रेरी एंड डिज़ाइन के नाम से. दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट लाइब्रेरी. यू कैन गो थ्रू इट. बहुत से यूज़ केसेस हैं, वो आपको वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी. बट एक चीज़ जो आपको करने मतलब आप कर सकती हैं वो ये है कि यू स्टार्ट, इफ़ यू हैवंट डन UI UX लाइक कभी भी, तो आप just take a good application, just take Facebook, just take any application and start replicating it, literally pixel by pixel.
You will learn so many things about design there. स्टार्टिंग में आप ये एक दो एप्लीकेशन के साथ एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी साइजेस की और सब चीज़ों की. अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू design something, get a mentor. You can just connect, you can go to the UXTP group. There are lots of people and there are lots of amazing people. You can connect with them. They're designers. You can connect with them. You can talk. If you want to get a mentorship, you can talk to them and you can say, okay, please, I want to be mentored. If you have any questions, you can post it there and people are really good. They will help you out. That's how you do things. I hope it's helpful. थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली हेल्पफुल. सो एक और सवाल है जो कि मैंने जब ये फील्ड एक्सप्लोर की थी तो मैं तो इसी चीज़ में फंस गई थी कि यूआई के यूएक्स बहुत ज़्यादा ये सवाल हर जगह है कि यूआई यूएक्स डिफरेंट चीज़ है कि सेम चीज़ है. मुझे तो पता चल गया सर्च कर करके, लेकिन आई होप आप ऑडियंस को बता दें. Sure. Yes, this is a very good question. UI and UX and किसके फेवर में आपको जाना चाहिए. UI is user interface. That is something that if you are opening an application, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो UI है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस है. ये जो वेबसाइट आप खोल रहे हैं, कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं, वो आपका यूज़र इंटरफेस हो जाता है, वो UI है जो आपको नज़र आ रही है. UX is something जो is user experience. Is something कि आप वो ऐप खोल रहे हैं, आप डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, आपने अगर फूड पैंडा खोला है और आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ वो करना चाह रहे हैं, ऑर्डर करना चाह रहे हैं, that experience, how it was like to get into that app and do your desired action, how it was like, that whole experience is called user experience. अब UI is something जो perhaps आप लोगों ने for the designers there's two great platforms, Behance and Dribble, जहाँ पे आपको बहुत से डिज़ाइन के सैम्पल मिल जाएंगे. people design stuff and share their as a there are basically like portfolios of people there, right? बहुत सी UIs आपको वहाँ पे नज़र आएंगी, बहुत सी आपको ब्यूटीफुल चीज़ें नज़र आएंगी, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है. अब that is UI. Now user experience is something which has a lot more deeper meaning. It's like body and soul. UI is your body and UX is your soul. UX is like that creates meaning. UX is like what user, if you are making an application, okay, your focus will be like what user wants, and the whole journey of user from the first click into your app or into your application, from going out of your application, that whole thing is an experience. And for example, मैंने एक फॉर्म फिल किया और उस एंड में मैंने एक बहुत लंबा फॉर्म था. आई वॉज ऑलरेडी लाइक ओ माई गॉड, मुझे इतना लंबा फॉर्म फिल करना पड़ेगा. बट व्हेन आई स्टार्ट फिलिंग दैट, आई फिल दैट एंड देन आई जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज. कोई इंटरनेट एरर आया और सारा मेरा डेटा उड़ गया. Now I have to refill that form again, and this will just put me off, and I'll just close that app and just walk away. But अच्छा user experience क्या होगा कि if there is some internet lagging या कुछ भी मसला हुआ है, वो रीलोड होके वापस मेरा डेटा वहाँ पे सेव हुआ हो, एंड दे से कि आपका ये डेटा है, आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकें. दैट विल मेक मी हैप्पी. दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस. I mean, अगर कोई भी मसला आया, I didn't have to do it again, all that thing again. So this is the minor things. If you have आप कहीं नई जगह पे मूव करते हैं and there you go and say hello to your neighbor and they say hello back and you return home. But अगर आप अभी नए नए मूव हुए हैं किसी जगह पे और कोई आपके नेबर आपके लिए कोई खाने लाइक कोई गिफ्ट भेजता है, what that experience will be like? It will make you happy. At least it will put a smile on your face. That's an experience, right? So that experience is really important. If I'm totally emphasizing on user experience, that doesn't mean that UI important ही नहीं है. So if you are making something that
looks really good, like awesome, बट उसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा है. मैं जाती हूँ, मैं हमेशा स्टक हो जाती हूँ, लोडिंग में इतना टाइम लग रहा है. दैट्स अ बैड एक्सपीरियंस. मुझे बहुत बुरा लगेगा. मैं आई विल स्टॉप गोइंग टू दैट साइड बिकॉज इट जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल but it doesn't help me do my things. But on contrary, if there is an app जिसमें जो चलती बहुत अच्छी है but its UI is like literally black है, ऊपर green and really different colors से कुछ हो रहा है, or there are lots of things going around in that, it will also be difficult for me to go to that app. So being a designer, over the main thing we should have in mind is to create a balance between between UI and UX. That balance is really important. If anything goes up and down, the product is not perfect. The product suffers, and majorly users suffer. And if users suffer, that means you're not doing a good job at it. What do you- सो आपने बहुत अच्छा समझाया. करेक्ट मी प्लीज़, मैंने कहीं इंटरनेट पे कहीं देखा कि UI इज़ अ पार्ट ऑफ UX, सब Mhm. पार्ट ऑफ UX. इज़ दैट राइट? We can say that when we talk about use design, for example, when you are designing, if we are talking about product, right? There is UX and then there is UI. You can say the starting point should be UX, how you start doing, and then when you are starting your journey, starting point is UX, and UI will start, making its space inside it along the way. So, as you're saying, we can say that yes, UI is the part of UX. We can say that. Yeah. थैंक यू सो मच. Mhm. Anything else? So, Kiran, my question was actually a blend of two questions. Mm-hmm. Okay, like I am a content writer right now. I'm serving as writing. Writing Mm-hmm. also needs creativity, and designing also needs creativity. Mm-hmm. If I want to go for designing, so how would I switch, or would it be better for me to switch like creativity दोनों जगह पे है? एंड सेकेंडली अगर मैं वहाँ जाती हूँ इन केस मैं एक अच्छी डिजाइनर भी प्रूव हो जाती हूँ, how would I stand my profile out of the so much 100,000 people sitting there who are actually perfect designers? So Mm-hmm. on these two things, can you say something which audience want to know? Mm-hmm. Thank you, Damia. That's also an interesting question. So, um, creativity. If you talk about creativity, creativity is in everything. It's not just आप राइटिंग कर रहे हैं, आप इवन आप एक अच्छा कोड लिख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एट टाइम्स आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू बी क्रिएटिव. ठीक है. अब हम अगर कंपैरिजन करते हैं कंटेंट राइटिंग और डिज़ाइन का, तो बोथ आर कंसिडर्ड वेरी क्रिएटिव फील्ड. दोनों में क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, राइट? सो आई बिलीव कि अगर आप स्विच करना भी चाहती हैं, यू कैन डू. फर्स्ट थिंग आपको खुद से ये चीज़ पूछनी चाहिए, आई मीन, डू यू वांट टू गो टू डिज़ाइन? डज इट अपील टू यू? It's not that we can decide कि भाई you should go or you should not go. It's your decision to take. Both are creative fields, both have their limitations and pros and cons. First thing that you need to think about is to close your eyes and think, do I need to do creative writing, or do I need to go to designing stuff? That's the first question that you will ask yourself, because nobody can take that decision for you, right? So that is one thing that you will start with. When you will so if you have closed your eyes and the answer has come from inside that yes, I want to design, and then what you need to do is the same thing that I told Anusha. You first start with learning, start with mentor. You start doing things by just taking an application and replicating it.
It will take time because, I mean, if somebody has been working in this field for 5, 6, 8 years now, and you have just started, then it will take time for you to go reach there. But it's not that you cannot reach there. You can reach there with, your enthusiasm, your shrill, you know this thing in you that you want to learn, you want to excel in design. That is really important. You will be there. You can start by creating first thing that you can do is you can start by creating portfolio that is majorly UI, because UX is something जो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे होते हो. UX आप सीखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, and then start create building your portfolio. That portfolio is the door. That's not the end goal. That portfolio is the goal that you will achieve. That portfolio will get you inside a company where they are doing UI UX. When you get into that company, there you will get millions of opportunities of learning, of growth, of experimenting, and of trying things first hand, right? जो चीज़ आप for example, I just tell you to create an application, you will do create an application. जब आप वो real environment में बनाएंगी, there will be huge of missile that will come your way, right? There will be developers up your nose कि भाई ये चीज़ ठीक कर दो, ये नहीं सही, ये नहीं ठीक, and you have to do things on run time. जब आप रन टाइम पे सब चीज़ें करेंगी, जो लर्निंग वहाँ पे होगी वो आप अकेले मतलब अपनी पोर्टफोलियो बनाने में आपको कभी भी नहीं होगी. बट फर्स्ट स्टेप विल बी पोर्टफोलियो, बिकॉज दैट विल गेट यू इनसाइड दैट कंपनी, in any company. I believe I answered your question, but if there is anything you can let me know. You definitely answered my question and मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आंखें बंद करूंगी तो मैं शायद डिजाइनर ही उठूंगी सुबह. That was really so much great session and मेरे और नूशा की तरफ से तो सवाल जितने भी थे हमने आज खुल के पूछ लिए हैं. If any audience member want to ask any question, he or she may. Well, I guess there's no questions today. समझाया इन्होंने इतना अच्छा है माशाल्लाह. या सबको समझ आ गया या किसी को कुछ समझ नहीं आया? So बहुत अच्छा समझ आया. You are on mute. Yeah, sorry, didn't see it. Well, I think today's session is going well. Really, तभी तो कोई सवाल नहीं आया. जो भी शायद सवाल थे, उसका जवाब आपने automatically दे दिया. तो I think there is no question. So it's 7:55, and let's end it with a great closing ceremony because today is the last day. And thank you so much, Kiran, for coming in this session. And I think we have a question. Okay, let's display it. Okay, do you think that Canva is a great place to start? I've explored Canva, by the way, but yes, we can. If you are starting, you can start with Canva. Photoshop, Illustrator, XD, there are lots of tools out there, and they are just tools. Your creativity comes from here, right? So whatever tool you want to start with, you can start with. But just to tell you that Canva is you cannot make something very customized there that much. So if you want to start with Canva, you can start. Otherwise, there are lots of tools, and I believe that tools are just tools. I mean, if you want to write something beautiful, it comes from here. Language is just a tool. So it's same with with any of the tool that you want to start with. You can start with Canva. Yeah. Actually, I have a question, Kiran. Yes. Mockups, wireframing और prototyping, क्या ये तीनों चीज़ें UI UX का पार्ट हैं?
Yes. So when we are saying UI UX में हमारा major focus होता है web applications और ये dashboards, mobile apps design करना. Um, Wireframes are something जो हम लोग इस process के शुरू में use करते हैं. When requirement हम define कर रहे होते हैं, हम किसी product को define कर रहे होते हैं, तो we are एक sketching, आप जो simple sketches बनाते हो, what can be done, what cannot be done. uh, that could be on paper, that could be on any online platform, that could be on the tool you are using, right? That is something जो एक रफ, जो आप एक ड्राफ्ट बना रहे होते हो अपनी जो आपके माइंड में सब कनेक्शंस हैं उनको अपने पेपर पे लेके आ रहे हो, और दैट इज रफ काइंड ऑफ अ थिंग, उनको हम वायर फ्रेम्स कहते हैं. Then comes the mock-ups. Mock-ups are basically जो भी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसके जितने भी डिज़ाइंस होते हैं हम उनको मॉकअप्स कहते हैं. दे आर द थिंग्स दैट आर द एंड यू give to the developers and they start developing it. That's mockups. या यू कैन से कि वो जो एक होता है ना, एक प्रोडक्ट प्लान होता है, प्रोडक्ट का पहली स्क्रीन कैसी होगी, दूसरी कैसी होगी, डिटेल प्लान, दैट कुड बी कॉल्ड mockup. And then prototyping is basically the interactions. प्रोटोटाइपिंग इज वेयर, फॉर एग्जांपल मैं इस बटन को प्रेस करूँगी तो कौन सी एनिमेशन आएगी, हवर कैसा होगा, या मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में मूव करूँगी तो दूसरी स्क्रीन में चीज़ें कैसे पॉपअप होंगी. ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रोटोटाइपिंग में आती है. There are multiple tools for prototyping as well. I believe you can search up Marvel, and then there's InVision, जिसमें थोड़ी ऑटो एनिमेशन, आपको कुछ सेट ऑफ एनिमेशंस होती हैं आपके पास और आप उसको खुद ही वो कर सकते हो. अदरवाइज एक्सपीरियंस डिज़ाइन XD अडोबी का एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ नॉर्मली यूज. पहले फोटोशॉप यूज़ होता था, अब XD पे बहुत से लोग मूव हो गए हैं. XD एंड देन देयर इज़ फिग्मा दैट इज़ ऑनलाइन. So these are the two tools जो बहुत commonly अब use हो रहे हैं, because Photoshop is very heavy. It takes आपका पूरा system, ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं when you are using Photoshop. So that is crash बहुत करता है. So XD is a lighter version and very quick. UI UX के लिए XD is a great tool to start with. Figma is a great tool to start with. So yeah, mockup, prototyping and wireframes. These are the things. थैंक यू सो मच. आपने एक क्वेश्चन के जो है ना, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, तो मेरे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. थैंक यू सो मच. No problem. Anything else? Okay, so that's we don't have any questions. तो फिर एंड करते हैं सेशन को. और बहुत शुक्रिया किरण, आप यहाँ पे आई हैं और आपने सारे जितनी भी डिज़ाइनिंग थी आपने सब कुछ क्लियर आउट कर दिया है. आई होप कि जो भी ऑडियंस है वो देख रही हैं उनको भी थोड़ा नॉलेज मौजूद हो चुकी होगी कि असल डिज़ाइन है क्या और हमने किस तरह इसको लेना चाहिए. सो दैट इज़ द लास्ट डे, टुडे इज़ द लास्ट डे. हम ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया है कि वो आए हैं, उन्होंने हमारा ये सेशन ज्वाइन किया है. जो भी कोई क्वेश्चंस थे उस चीज़ को उन्होंने क्लियर आउट किया है. एंड थैंक्स टू द कोलैबोरेटर्स, वी आर कोलैबोरेटर्स, इकरा फातिमा यूसुफ, निमरात, दामिया, हरीम, and everyone else. Thank you so much for being a collaborator of the Harfan Aurat, and thanks to the community outreach, especially the LTech, the AWS, the Women in Tech, the LUMS, IEEE LUMS, and the PWIC and Women in Tech. Everyone, thank you so much to be the collaborators of us. So let's end this session. Thank you so much for being here, and Allah Hafiz. Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.